Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, Book 3, Unit 8, The Old Man and the Tiger. Words to know: bundle, gattha; fault, khami; aib, graces, खूबियाँ; harsh, सख्त; heel, भर जाना, मुंदमिल होना; shrug, कंधे उचकाना; spurt, फवारे की तरह फूटना. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. एक गरीब बूढ़ा अपने बड़े से खानदान के साथ एक जंगल के बीचों बीच एक झोंपड़ी में रहता था. He was a woodcutter. वो एक लकड़हारा था. His sons and daughters were very young. उसके बेटे और बेटियां बहुत छोटे थे. His wife was busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. उसकी बीवी खाना पकाने, सफाई करने, धुलाई करने और बच्चों की देखभाल करने में मसरूफ रहती थी. She could not help him earn money. वो पैसा कमाने में उसकी मदद नहीं कर सकती थी. Every day the old man went deep into the forest and chopped wood. हर रोज बूढ़ा जंगल के अंदर जाता और लकड़ियां काटता. He gathered the wood, tied it in a bundle. वो लकड़ियों को इकट्ठा करता, उन्हें गट्ठे में बांधता, and carried it on his donkey to a nearby village market. और अपने गधे पर लाद कर नजदीकी गांव की मंडी में ले जाता. He sold the wood and bought food for his family. वो लकड़ियां बेचता और अपने खानदान के लिए खाना खरीदता. One day when the old man was busy at work, he heard a loud growl. एक रोज जब बूढ़ा अपने काम में मसरूफ था तो उसने एक बुलंद गुर्राहट सुनी. He put down his axe. उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रख दिया and stood very still और बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया. He was afraid of ghosts and thought to himself. वो भूतों से खौफजदा था और उसने सोचा, Oh dear me, if that it is a ghost, it may do me some harm. ओ मेरे खुदाया, अगर ये कोई भूत हुआ तो ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है. He was very frightened. वो बहुत खौफजदा था. Just then a large tiger came out of the bushes. उसी वक्त एक बड़ा सा शेर झाड़ियों से बाहर निकला. Do not be frightened, old man, said the tiger. खौफजदा मत हो बूढ़े, शेर ने कहा. यहाँ पे वैसे टाइगर का मतलब तो चीता होता है, लेकिन शेर भी कह सकते हैं क्योंकि कहानी में शेर कहना ज्यादा सूटेबल लग रहा है. I won't harm you. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. You work very hard. तुम बहुत मेहनत करते हो. Sit down and rest for a while. बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करो. And let me do your work. और तुम्हारा काम मुझे करने दो. The old man was surprised. बूढ़ा हैरान हुआ. He did not know that tigers could talk. वो नहीं जानता था कि शेर बातें कर सकते हैं. And what's more, और इससे बढ़कर, this tiger was offering to help him.
یہ کہ یہ شیر اس کی مدد کرنے کی پیشکش کر رہا تھا. آفرنگ پیشکش کرنا. How kind you are, dear tiger, he said. تم کتنے مہربان ہو پیارے شیر، اس نے کہا. The old man rested under a tree. بوڑھا ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا. While the tiger worked. جبکہ شیر کام کرنے لگا. Soon all the wood was cut. جلد ہی سب لکڑیاں کٹ گئیں. The old man and the tiger tied the wood into a bundle. بوڑھے اور شیر نے لکڑیوں کو گٹھے میں باندھا. And loaded it on to the donkey's back. اور انہیں گدھے کی بیک یعنی پشت پر لاد دیا. The old man thanked the tiger. بوڑھے نے شیر کا شکریہ ادا کیا. And went off to sell the wood. اور لکڑیاں بیچنے چلا گیا. The next day the tiger arrived. اگلے روز شیر آ پہنچا. And helped the old man again. اور بوڑھے کی ایک بار پھر مدد کی. This went on for some weeks. یہ سلسلہ چند ہفتوں تک چلتا رہا. One day after their work was finished. ایک روز جب کہ کام ختم ہو چکا تھا. The tiger lay down. شیر لیٹ گیا. And rested his head in the old man's lap. اور اپنا سر بوڑھے کی گود میں رکھ دیا. Lap mean گود. The old man stroked the tiger's fine coat. بوڑھا شیر اس کی عمدہ کھال کو سہلانے لگا. یہاں کوٹ سے مطلب شیر کی کھال لیا جا سکتا ہے. The tiger purred like a cat. شیر بلی کی طرح خرخرانے لگا. He looked up into the old man's eyes and asked, Am I handsome? اس نے نظر اٹھا کر بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ Oh yes, indeed, replied the old man. Oh ہاں، یقیناً. Indeed کا مطلب یقیناً. You are very handsome. تم بہت خوبصورت ہو. بوڑھے نے جواب دیا. Am I strong? asked the tiger. کیا میں طاقتور ہوں؟ شیر نے پوچھا. Yes, of course. You are extremely strong, replied the old man. ہاں، بے شک تم بہت زیادہ طاقتور ہو، بوڑھے نے جواب دیا. Am I young and full of energy? asked the tiger. کیا میں نوجوان اور طاقت سے بھرپور ہوں؟ شیر نے پوچھا. Yes, yes, replied the old man. You certainly are. ہاں ہاں، بوڑھے نے جواب دیا، تم یقیناً ہو. Ah, sighed the tiger, I have all the graces. شیر نے آہ بھری، مجھ میں تمام خوبیاں ہیں. You surely do, said the old man. یقیناً ہیں، بوڑھے نے کہا. But do you know, مگر کیا تم جانتے ہو، you have one fault، کہ تم میں ایک عیب ہے. Your skin stinks، تمہاری کھال سے بدبو اٹھتی ہے. You are certainly very smelly، تم واقعی بہت بدبودار ہو. So, if you don't mind، لہٰذا اگر تمہیں برا نہ لگے، please take your head off my lap، تو مہربانی کر کے میری گود سے سر اٹھا لو. My wife will throw me out if I smell like you. اگر تم جیسی بدبو مجھ سے آئی تو میری بیوی مجھے گھر سے نکال دے گی. The tiger immediately stopped purring. شیر نے فوراً خرخرانا بند کر دیا. He got up and brought the eggs. وہ کھڑا ہوا اور کلہاڑا لے آیا.
Come, take this axe, my friend. आओ ये कुल्हाड़ा लो मेरे दोस्त. Strike me on the back, said the tiger. मेरी कमर पर वार करो, शेर ने कहा. Oh no, said the old man. I can't possibly hurt you. ओ नहीं, बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें किसी सूरत तकलीफ नहीं पहुंचा सकता. But I wish it, said the tiger, and he began to growl. मगर ये मेरी ख्वाहिश है, शेर ने कहा और गुर्राने लगा. The old man did not know what to do. बूढ़े की समझ में ना आया कि क्या करे. So he shrugged his shoulders. लिहाजा उसने अपने कंधे उचकाए. Lifted the axe, कुल्हाड़ा उठाया, and then brought it down on the tiger's back, और फिर उसे शेर की कमर पर दे मारा. A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's back. शेर की कमर के नजदीक 2 उंगली के बराबर गहरा जख्म बन गया. And the blood spurted out, और खून फूटने लगा. Made the tiger's coat red and sticky. It made the tiger's coat red and sticky. इससे शेर की खाल सुर्ख और चिपचिपी हो गई. The tiger went off into the forest. शेर जंगल में चला गया. And the old man took his wood to the market. और बूढ़ा अपनी लकड़ियां मंडी में ले गया. The next day the old man went about his work. अगले रोज बूढ़ा अपने काम में लगा रहा. The tiger came and watched him from a distance. शेर आया और दूर से उसे देखने लगा. But said nothing. मगर कुछ न बोला. The old man began to feel frightened. आदमी को खौफ महसूस होने लगा. Time went by and then one day. वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन. The tiger suddenly sprang out from behind a bush towards the old man. शेर अचानक एक झाड़ी के पीछे से कूदकर आदमी की तरफ आया. He said, "Look at my back, old man." उसने कहा, मेरी कमर को देखो, बूढ़े आदमी. What can you see now? अब तुम क्या देख सकते हो? The old man looked carefully. बूढ़े ने गौर से देखा. But he couldn't find the axe wound. मगर उसे कुल्हाड़े के जख्म का निशान ना मिला. It is healed, he exclaimed. There is no mark there. उसने बेसाख्ता कहा, ये मुंदमिल हो गया है, यहाँ कोई निशान नहीं है. Yes, replied the tiger. हाँ, शेर ने जवाब दिया. The wound has healed. जख्म भर गया है, मुंदमिल हो गया है. But your harsh words have stayed in my heart. मगर तुम्हारे सख्त अल्फाज मेरे दिल में मौजूद रहे हैं. That can never be healed. वो कभी नहीं भरे, वो कभी मुंदमिल नहीं हो सकते. I will always remember what you said about my stinking skin. वो मेरी बदबूदार खाल के बारे में तुमने जो कहा, मैं वो हमेशा याद रखूंगा. You must now leave forest. अब तुम्हें चाहिए कि जंगल से चले जाओ. और I shall eat you up. वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा. And with that he gave an enormous roar. और इसके साथ उसने एक जोरदार धाड़ बुलंद की. The old man left the forest. बूढ़ा जंगल से निकल गया. And from that day he feared all tigers. और उस रोज से तमाम शेरों से डरने लगा. Other men too are now afraid of tigers. अब दूसरे आदमी भी शेरों से खौफजदा हैं.
اس کہانی میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، اٹ از گڈ ٹو ریمبر دیٹ، کہ چاقو یا کلہاڑے کے جو لگائے کے زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو الفاظ جو سخت الفاظ کے لگائے کے زخم ہوتے ہیں جو آپ کے دل پہ لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھنا مت بھولیے، میرا چینل سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔